जय श्री स्वामीनारायण। श्री सज्जानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSGM इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऑनलाइन टीचिंग में आपनु हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस. Our topic of lesson number 2, that is concentration of solution. In last video I taught you the properties of solution and how the solution is reacting, components of solution, all that things. Now moving forward to the next topic, that is concentration of solution. Okay, now what do you mean by concentration? क्या होता है? I think आपने 8th और फर्स्ट चैप्टर में सुना होगा concentration. अगर नहीं सुना है, so concentration that means the amount of solute that you are adding into the solution. अब कितनी अमाउंट का सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में ऐड करते हो, उसके ऊपर से उसका कंसंट्रेशन जो है वो डिफाइन होता है. एंड योर कंसंट्रेशन दैट इज डिपेंड ऑन योर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. हाउ दैट वी हैव two beakers, in both two beaker take the same amount of water. Okay, now in beaker A add 10 ml HCl, that is hydrochloric acid, and in beaker B add 20 ml of HCl. Okay, the amount of water is same, but the amount of solute, remember the word solute, that is the lesser component in solution. Okay, the amount of solute we are adding in different amount. तो कैसे पता चलेगा कि आपका solution concentrated है या the another word that is dilute. तो dear students, remember this thing, जिस सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉल्यूट कम अमाउंट में है यानी कि लेसर अमाउंट में है, दैट इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन. एंड जिस सॉल्यूशन के अंदर आपका जो सॉल्यूट है वो लार्जर अमाउंट में है कंपेयर टू दिस वन. ओके, सो दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ओके, सो दिस टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर देयर, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट. एंड कंसंट्रेशन यानी कि क्या? Concentration यानी कि the amount you are adding into the of solute into the solution. Okay, उसके ऊपर से आपका concentration define होता है. Now remember activity 2.2. 2.2 activity में क्या किया था आपने कि स्टूडेंट्स जितने भी टोटल थे उसके 4 पार्ट्स कर दिए थे एंड टीम A, B, C, D. Now we will not talk about the C and D, but remember the first and second team, that is A and B. In that you have to take 2 test tubes. In test tube A, take copper sulfate solution plus water, and team B take the copper sulfate solution in water. But what is the difference between these two test tube? In team B यानी कि test tube B, you have to add the more amount of copper sulfate. अब सॉल्यूशन सेम है, योर सॉल्यूशन इट इज ऑल्सो होमोजीनियस, उसके अंदर सॉल्यूट भी सेम है, बट वेयर इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इन दैट कि योर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिफरेंट. एक जो टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर आपने अगर 50 ग्राम जितना कॉपर सल्फेट लिया है एंड द अनदर वन टेस्ट ट्यूब यू इफ यू आर टेकिंग 100 ग्राम कॉपर सल्फेट पाउडर. ओके, अब वाटर की अमाउंट सेम है तो कलर चेंज आपको कहाँ पे दिखेगा? द फर्स्ट वन दैट इज कलर, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग हो जाएगा. ओके, द केमिकल प्रॉपर्टी विल बी द सेम, बट वेयर इट विल बी डिफर इन कलर एंड ऑल्सो इन टू द कंसंट्रेशन. तो इसमें हम डाइल्यूट किसको बोलेंगे? जिसके अंदर आपका सॉल्यूट यानी कि कॉपर सल्फेट 50 ग्राम है एंड द कंसंट्रेटेड दैट मीन्स जिसके अंदर आपका कॉपर सल्फेट जो है वो 100 ग्राम में है यानी कि सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है, सो दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्लियर अबाउट कंसंट्रेशन. ओके, कंसंट्रेशन दैट इज डिफरेंट एंड उसकी जो अमाउंट है वो किसके ऊपर डिपेंड है? सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड है. एंड सॉल्यूट के ऊपर से सॉल्यूशन के 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज dilute and concentrated. Okay, now read this activity 2.3 in your textbook. In that, take 2 beaker,
take same amount of water, that is 50 ml. In the first beaker add some amount of salt, you can take 1 tablespoon, and in the second beaker take 1 tablespoon sugar or you can take barium chloride. Okay? अब दोनों सॉल्यूशन जो है वो सेम अमाउंट में है. Now heat this both solution any particular temperature, दोनों सॉल्यूशन को सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करना है. आफ्टर हीटिंग गिव टाइम फॉर कूलिंग, उसको डिस्टर्ब किए बिना कीप इट अनडिस्टर्ब एंड उसको कूल करना है. नाउ उसके बाद आपको क्या करना है, अंदर आप सॉल्ट ऐड करो. जो फर्स्ट आपका बीकर है उसके अंदर आप एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड करो, तो क्या होगा, सॉल्ट डिसॉल्व होगा? नो. इफ यू आर एडिंग सुगर इनटू द सेकेंड बीकर, सुगर विल बी नॉट डिसॉल्व इनटू द टेस्ट ट्यूब. व्हाई? तो हर एक सॉल्यूट की एक लिमिटेशन आ जाती है. इफ यू आर प्रोवाइडिंग द एक्स्ट्रा टेम्परेचर ऑल्सो, then also it will be not dissolved into the water. So if your solute is not dissolved into your solution after certain temperature, that kind of solutions are called saturated solution. And the amount of solute which is soluble into your saturated solution, उससे ज़्यादा अगर आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो वो डिसॉल्व नहीं होगा. तो पहले जो dissolved amount which is in saturated solution, that is called your solubility. Clear about solubility and saturated solution? आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों के अंदर सेम अमाउंट में वाटर लेना है. एक टेस्ट ट्यूब में 1 टेबलस्पून सॉल्ट, दूसरे टेस्ट ट्यूब में 1 टेबलस्पून शुगर और यू कैन टेक बेरियम क्लोराइड. अब दोनों को पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करना है, उसको ठंडा होने देना है. अगेन अगर आप उसके अंदर सॉल्ट ऐड करते हो और वो डिसॉल्व नहीं होता है, ओके, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अगर आप उसके अंदर ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करते हो और वो डिसॉल्व नहीं होता है, तो जिस टेम्परेचर से आपका सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, उस टेम्परेचर के बाद आपका जो सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एंड जो सॉल्यूट ऑलरेडी पहले से डिसॉल्व है, the amount of solute which is dissolved in your saturated solution, that is called your solubility. Clear about this? Now if you are adding the extra solute or if you have less solute, the solute component आपके पास कम है, ओके, जैसे कि सुगर का सॉल्यूशन है, सुगर प्लस वाटर है, तो उसके अंदर अगर सुगर की अमाउंट कम है, लेस कंपोनेंट है, सो दैट इज कॉल्ड, दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड unsaturated solution. So dear students, from this activity 2.2 and 2.3, that should be clear about the concentration. Okay, so the next topic, that how we can measure the concentrate of mass by volume, mass by mass and volume by volume, that we will count into the percentage. Now you have to note down this equation which I am writing on board. 3 equations are there, that how we can count the concentration of solute. Everywhere the solute which is important, because कोई भी solution का जब हम concentration measure करते हैं तो that is totally depend on the amount of solute. So dear students, write down these 3 equation. The first one, that is mass by mass percentage of solution write down the equation which are given in your textbook also, that mass by mass percentage of a solution is equal to mass of solute divided by mass of solution. And if you want to find out percentage, so multiply by 100. Write down the second one, that is mass by volume
percentage of solution is equal to mass of solute divided by volume of solution यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि ये इक्वेशन हम कब यूज कर सकते हैं, द फर्स्ट वन व्हेन बोथ शुड बी इनटू द सॉलिड फॉर्म, मास है दोनों जगह पे, ओके। सेकेंड वन कब यूज कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है बट द सॉल्यूशन इट विल बिकम अ लिक्विड, ओके, हियर इट इज अ वॉल्यूम. So when you are adding solid into the liquid, you can use this equation, and the last one, that is volume by volume percentage of solution, that is volume of solute divided by volume of solution. Note down all these three equations in your fair notebook, and dear students, after this example 2.1 it is given, just read this example. In next video I will solve your doubt in this into the next video. Your question it is, a solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water. Remember one thing, they gave you 40 gram of common salt, that is into the form of solid, and 320 gram of water, that is liquid. Calculate the concentration of terms of mass by mass percentage of the solution. So which equation you will use? Mass by mass. आपको दे दिया गया है कि mass by mass. So mass of solute, and here mass of solution. Now you don't have mass of solution because आपको solute दिया गया है और solvent दिया है. Water, it is a solvent into the question. So आपको mass of solution find out करना होगा, and then put down the values, and you will get the ratio of mass by mass percentage of solution, okay. This is the homework of today, that write down all these three equations and solve example 2.1. If you have any doubt into this, you can ask me into Teams. Jai Shri Swaminarayan.